identification of any unknown organic compound. I've given you a detailed lectures about how you need to follow different tests for the identification of different compounds. I hope you people have gone through previous lectures. Let's discuss those first, then we can move on to explain next, inshallah. May I talk to somebody 066? Aliza Batul Bibi, are you there, madam? Could you explain how one should start with the identification of unknown organic compounds? Could you explain how one should start, please? सर सबसे पहले हम लोग chem टेस्ट करते हैं. Okay, what is suggest then? तो सर उसमें अगर स्मोकी है तो बेंजीन है, अगर स्मोकी है तो अलिफेटिक कंपाउंड है. उसके बाद फिर ब्रोमाइन वाटर टेस्ट करते हैं. तो ब्रोमाइन वाटर का कलर डिसअपीयर हो जाए तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर ना हो तो सैचुरेटेड कंपाउंड. देन लिटमस सोल्यूशन टेस्ट, उसमें एसिड, बेसिक और न्यूट्रल टेस्ट होते हैं. अगर एसिडिक इन नेचर तो उसमें दो टेस्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फेनॉल. बेसिक में हम लोग को देखते हैं अमाइड्स का, और न्यूट्रल में देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट्स. तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को करने के लिए आइडेंटिफिकेशन एक टेस्ट है NaCO3 टेस्ट. और उसमें अगर कोई भी हम लोग 1706 Myra Khalid Bibi. Are you there? Myra Khalid Bibi. Uh-huh. 031. जी सर. जी मैडम, have you gone through the previous lectures? जी सर. Could you explain the chemistry of sodium bicarbonate test? Sodium bicarbonate test, chemistry of sodium bicarbonate test. सर इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं और सोडियम एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है ना वो कार्बोनिक एसिड से होती है. That's good, that's very good. Okay. Somebody 036. 17036. Yes sir. जी मैडम, have you gone through the previous lecture? Okay sir. Could you explain the diazotization process? सर डाइऑक्साइडेशन में प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक अमाइन का हम रिएक्शन करवाते हैं. क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है ऊपर. और सर इस तरह उसके बाद हम इसको करवाते हैं, कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं कपलर के साथ. और उसके बाद सर हमारे पास डाई क्रिएट होती है. इस साल्ट की केमिस्ट्री क्या होती है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसे रिएक्ट कर जाता है? It reacts with the coupler. Why it reacts with the coupler? सर कपलर के साथ कलर के डाई प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्ट करवाते हैं और डाई में सर कलर आते हैं. और सर जैसे कपलर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, उनके ऊपर जो ऊपर ग्रुप लगा होता है, अगर वो ऑर्थो हो तो वो ऑर्थो की तरफ जाता है. डायसोडिशन आयन होता है, और अगर उसके ऊपर मेटा डायरेक्टिंग हो तो वो मेटा की प्लेस पर है. 046.
046 please. 17046 Hassan Khalid. 033 033. Could you explain that how the neutral compounds could be identified in using wet lab chemistry? What are the neutral compounds, please? Neutral compound. What are the neutral compounds? Do you have an idea? सर जब हम उनका लिक्विड टेस्ट करेंगे तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो न्यूट्रल होंगे। बच्चे कौन कौन से होते हैं? सर कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। और टेस्ट कौन से होते हैं बच्चों जो इसकी कंफर्मेशन दे सकते हैं? सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए हम करते हैं उसमें हाइड्रोल कीटोन को देखने के लिए करते हैं ना, और उसके लिए हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम मॉलिश टेस्ट करते हैं। ओके, मेन टेस्ट भी होते हैं। दैट्स ओके, फाइन, गुड। 040 उस्मान मजहब। 040 प्लीज। 039 039 वकार अब्बास। मैडम जी यार ये बच्चे जो रिस्पॉन्स नहीं देते इनको जो है बेहतर होगा फिर हम एब्सेंट करेंगे, या तो ये लॉग इन होके चले जाते हैं या फिर ये इंटेंशनली नहीं रिस्पॉन्स दे रहे होते। दिस इज नॉट अप्रिशिएटेबल। 017 017 034। यस सर। जी भाई। यस। Or neutral compounds could be identified. Could you name the tests available used for the identification of neutral compounds? सर न्यूट्रल कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए सर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होता है, और उसके जो एल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं सर एल्डिहाइड के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिश टेस्ट कर सकते हैं। That's so good. That's so good. That's so good. Molish. Right. 011 011 17 011 17 011 019 019 030 Lukman 17 030 please. G 019 are you there? Zero 19 are you there? Yes sir. Okay. All the basic compounds are identified using wet lab chemistry. Basic compound test for basic compounds. सर डाइजेशन जी और हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी। What happens in the diazotization test में क्या होता है?
सेल डायजोटाइजेशन में प्राइमरी एमाइंस को रिएक्ट करवाया जाता है NaNO2 और HCl के साथ। उसके रिजल्ट में हमें डायजोनियम साल्ट मिलता है। उस डायजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर please. 62. Zero 62. Okay, have you gone through the previous lecture that was on the identification of organic acids? In that test, you would have learned about the identification of carboxylic acids, you know, where we have explained to you the chemistry of sodium bicarbonate test. You people have an idea now. The sodium bicarbonate reacts with acid. As we have an idea, acids and bases do react to generate salts. So sodium acetate is produced and CO2 is evolved from bicarbonate, part of sodium bicarbonate, you know. That evolution of CO2 suggests that carboxylic acid is present in the given sample. This is how this test is used for the identification of organic acids. Now let me move to the test number 2 in acid category. If we perform sodium bicarbonate test on any given and that turns out to be negative, mean carboxylic acid not present, then what is going to be? Then the second choice is supposed to be the presence of phenols, you know. Phenols, you have an idea, benzenes carrying hydroxyl groups, they're supposed to be phenols. Phenols are also acidic in nature. They produce protons in solutions, you know. So anybody which produces proton, they are supposed to be acids. So phenols are acidic in nature as well. Phenols are identified using a test that is called FeCl3 test, neutral ferric chloride test. ठीक है, neutral FeCl3 test बोल देते हैं. What happens in this test? The metal Fe, iron. We have an idea metals are electron deficient. They need electron. उनको electron की जरूरत होती है. In phenols we have hydroxyl group O. Where O can donate electrons, you know. The oxygens of the carbonic of the phenolic part, they donate electrons to the metal and they generate complex. वहाँ पर complex generate होता है. आपको पता है ना, metals और non metals की जो coordination coupling होती है, यानी कि ऑक्सीजन से लोन पेयर आएगा आयरन की तरफ, तो इनके दरमियान में the bond which is generated will be called as coordinate covalent bond. तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. आपने केमिस्ट्री में पहले कोर्स पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बॉन्ड्स बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान. एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज कलर्ड. जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्स होते हैं, कलर्स प्रोड्यूस हुए होते हैं. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में भी क्या होना है, कलर प्रोड्यूस हो जाता है. व्हेन फिनोल्स रिएक्ट विद आयरन due to the sharing of donation of lone pair of electron from the oxygen, the resulting compounds are supposed to be the coordinate the complexes. और फिर वहां पर पर्पल कलर का ना इस खास इस टेस्ट के अंदर पर्पल कलर जनरेट हो जाता है. वो कलर इसलिए जनरेट हुआ कि वहाँ कॉम्प्लेक्स बना है. कॉम्प्लेक्स क्यों बना है? इसलिए बना होगा कि ऑक्सीजन ने, जो कि फिनोल की ऑक्सीजन है, वो रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, उसने आगे बॉन्ड बनाया आयरन के साथ. इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कलर से हो जाती है. इस टेस्ट की कलर प्रोड्यूस होने से हम अंदाजा लगाते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है इट शुड बी अ फिनोल व्हिच हैज द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन फ्रॉम द रेजोनेटिंग
resonating benzene, so that complex molecule which could produce colors is a complex which produces color, and that confirm the presence of phenols. So this is how phenols, which are acidic compounds, they are confirmed by the neutral FeCl3 test. In this test, what happens? Complexes are generated. In case of sodium bicarbonate test with carboxylic acids, what happens? CO2 is evolved. So in each and every test, specific colors are produced or gases are produced. Sometimes colors are faded away. So each and every test have their specific conformations. So in this case, what happens? The complex formation due to phenol and the metal of FeCl3, the complexes are generated. Those are called coordination complexes, and the color will confirm the formation or presence of phenols. तो अब आपने जो पहले आपका लेक्चर क्लियर हुआ था ना, टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, उसका ही सेकंड पार्ट होगा. उसी टेस्ट के अंदर हमने दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं. एक तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन की है, देन आई हैव आल्सो एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट. तो आज आपने क्या करना है? रिविजिट द सेकंड पार्ट, द केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, so you people know how and what happens actually. Fp के साथ 3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे फिनॉक्सी के. फिनॉक्सी किसको कहते हैं? फिनोल्स के ऊपर जब प्रोटॉन उतर जाते हैं ना, तो जो पीछे बचता है O के साथ नेगेटिव नीचे बेंजीन होता है, इसको फिनॉक्साइड बोल देते हैं या फिनॉक्सी कह देते हैं. 3 फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट विद Fp, तो ये एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो इसकी केमिस्ट्री काइंडली जरा पढ़िए, सो दैट यू पीपल हैव एन आइडिया अबाउट द chemistry of neutral efficiency test. And if you have any question, you may write that down and we will explain that in next meeting. Okay, sir. If you have any questions, then you can write them down and we will have discussion in the next meeting. With this, I will end the meeting. I'm getting a bit important call really. So we'll hope to see you next time.